Hello friends, in this video lecture we will be discussing section 28 of Indian Contract Act. So Contract Act में section 28 we will be discussing. So this section is very important and we will be doing complete analysis of this section. So firstly this section bars any stipulation in an agreement which is in restraint of legal proceeding. It says that any stipulation or any term in a contract or an agreement which restrains the legal proceeding will be void. मतलब उसका कोई मतलब नहीं होगा. So what is this restraint of legal proceeding? It means that कि अगर कोई भी breach of right होता है तो कोई भी ऐसा term हम agreement में नहीं डाल सकते which restricts the party to go to the court of law for enforcing such right. Okay, so therefore section 28 says that every agreement by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract, okay, by usual legal proceeding. सो अगर कोई भी एग्रीमेंट है और उसमें ऐसा कोई टर्म दिया है कि इन केस ऑफ ब्रीच यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू एनफोर्स योर राइट देन सच एन टर्म विल बी वॉइड. ओके, अब यहाँ पे क्या है विच एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेन्स फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट्स. तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल रेस्ट्रेंट इज अलाउड. पार्शियल रेस्ट्रेंट इज अलाउड. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए और बी ने एग्रीमेंट में किया डिसाइड कि अगर इन केस ऑफ ब्रीच नो वन ऑफ अस or in case of breach the party which is aggrieved cannot go to the court of law. Okay, so such an term will be void. But let's say will be void because it is like ousting the jurisdiction of court, ousting the jurisdiction of court, which is against public policy. So you cannot remove the jurisdiction of the court by putting a term into an agreement. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अगर ब्रीच होता है देन टू कोर्ट्स आर कॉम्पिटेंट टू हैव द jurisdiction like court A and court B depending on the place. तो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जा सकता है लेट्स से कोर्ट ए इज इन दिल्ली एंड कोर्ट बी is in Bombay. Okay, so the contract can stipulate a term that if there is a breach, one will go only to court A, which is in Delhi. So such a term is allowed. So therefore, uh, the word used here is absolute. Like absolute ये होगा कब? When the restriction is on both the courts. कि आप दोनों ही courts में नहीं जा सकते. Then it will be said to be that the party is absolutely restricted from enforcing his right. But in this case, there is a partial restriction that you cannot go to the court B, which is in Bombay, but yes, you can go to the court A, which is in Delhi. क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस से बहुत फर्क पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जिस पार्टी के लिए जो सा प्लेस कन्वीनियंट हो तो वो लोग पहले ही टर्म कर लेते हैं डिसाइड. सो प्लेस ऑफ convenience has to be seen. Okay, so this is why partial restraint is allowed. Okay, if two competent courts can deal with the matter or if they have the jurisdiction, then it is open to the parties that they can decide which court will adjudicate the matter. Okay, so therefore restriction should not be absolute but partial restriction is allowed. Okay, now if we see क्लॉज ए में पहला तो ये हो गया कि आप किसी को एब्सोल्युटली अपना राइट इन्फोर्स करने से नहीं रोक सकते, ऐसा कोई टर्म आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते. इसमें एक और पार्ट है और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच सच राइट कैन बी इन्फोर्स. और तो और आप कोई टाइम लिमिट भी नहीं डाल सकते. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ ब्रीच देन देर इज अ लिमिटेशन एक्ट जो कि टाइम लिमिट प्रोवाइड करता है. लेट्स से अगर कोई ब्रीच हुआ है और लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से 3 इयर्स है, विद इन 3 इयर्स यू हैव टू फाइल द केस, अदरवाइज योर राइट विल एक्सटिंग्विश टू फाइल द केस. ओके, तो ये तो वैलिड है.
बट आप कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि यहाँ पे बाय लॉ 3 इयर्स का टाइम है, बट आप कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं बोल सकते, ऐसा कोई टर्म नहीं डाल सकते दैट इन केस ऑफ ब्रीच यू हैव टू फाइल द केस विद इन 1 years. So you cannot reduce this statutory period of 3 years which is given in the Limitation Act. Okay, you cannot reduce this statutory period of 3 years which is given in the Limitation Act. So you cannot reduce it to 1 year or 2 year. Okay, so you cannot interfere with the time limit also, क्योंकि time limit भी statutorily governed by Limitation Act. So these two things, if a term which is absolutely in restricting the party to enforce his right, then such term will be void. Or if any term which places a time limit uh, to which the parties can enforce the right, then also such term will be void. ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ ना कि अगर आप अपना राइट इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो बहुत सी पार्टीज क्या कर रही थी, खास तौर पे बैंक्स, दे व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दे वर सेइंग दैट योर राइट्स विल बी एक्सटिंग्विश्ड विद इन 6 months ऑफ द ब्रीच। ठीक है, तो ऐसा टर्म तो डाल सकते थे, यहाँ पे वो ये नहीं बोल रहे कि आप कोर्ट मत जाना, बट वहां पे वो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट का ही टर्म डाल दे रहे थे दैट इन केस ऑफ ब्रीच इफ 6 months हैज बीन elapsed, योर योर राइट विल बी एक्सटिंग्विश्ड। तो जब राइट ही एक्सटिंग्विश हो गया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो आप कोर्ट किस बात का जाओगे? सो सीइंग दिस देयर वाज एन अमेंडमेंट डन, एंड दैट अमेंडमेंट एडेड clause B. So it says that you cannot put any term which extinguishes the right of the party. Okay, even that term will be void. So the clause B says that which extinguishes the right of any party thereto or discharges any party thereto from any liability under or in respect of any contract on expiry of a specified period. जैसे कि आपने ये डाल दिया कि with breach के 6 महीने के within ही, अगर 6 महीने बीत चुके हैं या इलैप्स हो चुके हैं, देन योर राइट्स विल एक्सटिंग्विश। तो ऐसा कोई आप क्लॉज नहीं डाल सकते। ओके, बिकॉज एज पर द लिमिटेशन पीरियड, मान लीजिए अगर ब्रीच के बाद 3 इयर्स का टाइम लिमिट है, ठीक है, देन यू कैन नॉट डू इट दैट कि 6 months के बाद आपका राइट ही एक्सटिंग्विश हो जाएगा एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर राइट एक्सटिंग्विश हो गया तो कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो क्लॉज ए था, इसको बाईपास करने के लिए बहुत सी बैंक्स या बहुत सी पार्टीज ऐसा क्लॉज डाल दे रहे थे कि दैट योर राइट विल बी एक्सटिंग्विश्ड। So when the right is extinguished, so you cannot enforce it in a court ना, because as per the contract only your right has been extinguished. अभी ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लॉज नहीं डाल रहे कि आप कोर्ट नहीं जा सकते या कोई टाइम लिमिट डाल दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस टाइम लिमिट के बाद आपका राइट ही एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो इसको ध्यान में देते हुए देयर वाज क्लॉज बी एडेड व्हिच आल्सो सेड दैट एनी टर्म व्हिच एक्सटिंग्विशेस द राइट, इवन दैट टर्म विल बी वॉइड। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस डाले। ठीक है, एक्सेप्शंस डाले इन केस ऑफ एन आर्बिट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा टर्म हो सकता है कि इन केस अ डिस्प्यूट arises, the parties will go to arbitration. So an arbitrator will be there who will be judging the issue and whose decision will be final. Okay, the arbitrator can be on the choice of the party or it can be on choice of one of the parties. Okay, so this exceptions was created. So exception 1 and 2 is regarding that if any uh, issue is there or any dispute is there which will arise, then also we can go to arbitrator, or any past issue is there which has already arisen, then that question of law can also be uh, can also be went to arbitrator. ओके, तो अगर कोई इशू अराइज होता है तो वो भी हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही कोई इशू अराइज हो चुका है तो उसके भी हम सोल्यूशन के लिए आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। ऐसे क्लॉसेस अलाउड हैं, बिकॉज आप कोर्ट के पास भी जा सकते हो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, बट अगर आपने ऐसा कोई क्लॉज डाल दिया कि वी वोंट गो टू द कोर्ट, वी विल गो टू द आर्बिट्रेटर फर्स्ट, so that clause is also fine. Okay, because here the objective is to promote ADR, okay, alternative dispute resolution, so as to reduce the burden of the courts. Okay, so this is exception 1 and exception 2. So up tak what we have seen is
कि सेक्शन 28 it restricts that if any term restricts the legal proceeding absolutely, then that term will be void. Therefore, if any term is absolutely restricting the party to enforce his right, then that term will be void. Or if any term which puts a time limit which is shorter than the time limit given by the law, then even that time limit will be void. So you cannot absolutely restrain a party to enforce his right, and you cannot also put some time limit that the parties can enforce their right within this time limit only. Okay, क्योंकि टाइम लिमिट इज डिफाइंड इन लिमिटेशन एक्ट एंड यू हैव टू गो एज पर दैट. आप कॉन्ट्रैक्ट में ही टर्म डाल के, अगर लिमिटेशन एक्ट में 3 इयर्स दिया हुआ है, आप उसको घटा के 1 ईयर नहीं कर सकते. ठीक है. Yes, partial restraint is allowed. Partial restraint will be allowed that you can choose one of the competent courts. अगर दो competent court है, then you can choose one of the competent court. So to that extent, you can restrain the party. Okay. Also, you cannot put any term which extinguishes the rights of the party. Okay. Exception 1 and 2 is regarding the arbitration. Now, this exception 3 is very important. क्योंकि देखिए ये जो अमेंडमेंट आया ना क्लॉज बी में, ये जो क्लॉज बी में एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स का जो अमेंडमेंट आया कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट विल आल्सो बी वॉइड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बता रहा हूं आपको. ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में ये एक्सटिंग्विशमेंट जो क्लॉज था बहुत दिया रहता था. बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट दे वर नॉट एबल टू पुट सो दे डिमांडेड and the legislation gave them an exception. Okay, so the legislation gave them an exception. So this exception was what? That any bank guarantee given by any bank or financial institution will not become illegal if they have a provision which extinguishes the right, which extinguishes the right to the period which is not less than 1 year. ठीक है. तो एक्सटिंग्विशमेंट वाला जो क्लॉज है ना, कि आप राइट्स एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, तो इसका एक्सेप्शन, क्योंकि इससे बैंक्स को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसका एक्सेप्शन यहाँ पे किया गया है क्रिएट. ओके, तो इसका एक्सेप्शन यहाँ क्रिएट किया गया. अगर this section shall not render illegal a contract in writing by which any bank or financial institution stipulate a term in guarantee or any agreement in making a provision for guarantee for extinguishment of rights from any liability under or in respect of such guarantee or agreement on the expiry of a specified period which is not less than 1 year. ठीक है. तो देखिए बैंक गारंटी क्या होती है. बैंक गारंटी ये होती है कि अगर ए ने बैंक गारंटी ली है और ए ने बी से कोई डेट लिया है, तो बी कैन क्लेम दैट, अगर ए इस फेल होता है इस पैसे को चुकाने में, देन बी कैन क्लेम दैट मनी फ्रॉम एस बैंक. एस बैंक और ए के बैंक ने ये गारंटी दी है. ठीक है. सो इफ ए हैज सम डेट टू बी एंड इफ ए fails to pay that debt to B, then B has a right to claim that debt from A's bank. Okay, so this bank guarantee is given when the client is of good repute. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि the bank can put some extinguishment right. So banks were saying that okay, if A fails to pay B, then within 1 year only B can claim the money. तो बैंक इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे थे. Okay, so in a way, as per the limitation act, 3 years is the time. Okay, but banks were reducing it to 1 year only. Okay, and they were not even doing that. They were saying that this 1 year, they were saying that it's the only time when B can claim the money. So they were treating this 1 year as a claiming period, as a claiming period. Okay, so this was wrong. This was wrong. Okay. So now in a very famous case recently only in Larsen and
टिब्रो लिमिटेड वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। इस के ये अभी 2021 का केस है। जजमेंट इसका आया है 31 जुलाई 2021। ओके, सो दिस इज अ वेरी रिसेंट केस एंड दिस केस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में कोर्ट ने एक्सेप्शन 3 ऑफ सेक्शन 28 को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है। एक्सेप्शन 3 ऑफ सेक्शन 28 को उन्होंने ये कहा है कि बैंक कैन डू एक्सटिंग्विशमेंट बट दिस 1 ईयर पीरियड इज रॉन्गली इंटरप्रेटेड बाय बैंक्स। ये 1 ईयर पीरियड बैंक क्या कर रहे थे कि अगर बैंक ने गारंटी दी है ए को, ठीक है, दैट इफ यू फेल then we will pay the debt to C. Okay, then they were saying that this claiming period is only for 1 year, like this 12 months। वो ऐसा क्लॉज डाल रहे थे कि ये 1 ईयर तक का ही है, ठीक है। they cannot do so, why? Because this 1 year is given that if A fails to pay C, तब जब से वो ब्रीच होगा ना, ब्रीच के बाद से 1 ईयर तक का टाइम है सी के पास to claim from the bank। okay, so it's not that from the initial level only 1 year time is there। the time starts from the day of breach when A defaults to pay C, then from that period till 1 year C who is the beneficiary will have the right to claim it from the bank। okay, so extinguishment in some way is allowed because the real time period as per limitation act is 3 years, so we are extinguishing it, so that therefore it is an exception 3। it is an exception to clause B of section 28। बट बैंक्स इसको और अलग वे में इंटरप्रेट कर रहे थे अब तक, और दे वर सेइंग दैट दिस 1 ईयर विच इज गिवन इन एक्सेप्शन 3 वही 1 पीरियड स्टार्टिंग से काउंट होगा एंड विद इन दैट 1 ईयर ओनली सी हैज टू क्लेम द मनी वेदर ए डिफॉल्ट्स और डू नॉट डिफॉल्ट्स। तो ये उन्होंने एकदम ही रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया था अपने फायदे के लिए, विच द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट दिस 1 ईयर विल स्टार्ट व्हेन ए डिफॉल्ट्स टू पे सी। okay, from that time this 1 year will start, so it is not the claiming period, this 1 year is not the claiming period, it is for the beneficiary, this year is for the beneficiary to claim within this 1 year only after default। after A has defaulted then beneficiary has 1 year time to claim money from bank। okay, so this case is very important, Larsen Tubro versus Punjab National Bank। so exception 3 does not deal with the claim period, ये claim period से deal नहीं करता है, it deals with the right of the creditor to enforce his right under the bank guarantee। तो अगर बैंक ने ए को गारंटी दी है कि इफ यू फेल टू पे योर डेट टू सी then we will give the guarantee, so the C is the creditor and when A defaults from that time C has 1 year time to claim it from the bank, so it is a very important judgment। okay, so till now the banks were having a wrong practice, they were treating this 1 year as the claiming period। देखिए extinguishment of right तो अभी भी हो ही रहा है, क्योंकि जब से ए ए ने जिसने गारंटी ली थी जब वो डिफॉल्ट करता है तो जो सी जो क्रेडिटर है जो बेनिफिशियरी उसके पास 1 ईयर का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट टू क्लेम फ्रॉम द बैंक, बट एज पर द लिमिटेशन एक्ट 3 years टाइम इज देयर, सो देयर इज अ curtailment of time within which the beneficiary can enforce, but such curtailment is given in the exception to section 28, therefore it is allowed, but you cannot treat that 12 month or 1 year time as the claim period, rather it will be period which will start after the default for the beneficiary the creditor to get back his money। okay, so therefore this point was really very important, ये अभी recent judgment में ही आया है। okay, now some of the important points, I will be starting from the beginning, that an agreement which is absolutely restraining a party from enforcing his right through a court or places a time limit within which a right can be enforced will be void। अब इसमें जो राइट टू अपील है इट डज नॉट कम विद इन दिस सेक्शन। राइट टू अपील के लिए आप डाल सकते हैं कि यू वोंट अपील, ऐसा क्लॉज आप डाल सकते हैं, राइट टू अपील इज नॉट हिट बाय section 28। okay, right to appeal is not hit by section 28।
So an agreement to oust the jurisdiction of the court is opposed to the public policy, even though the partial restriction is allowed. If two or more courts are competent, then partial restriction is allowed. ठीक है. तो appeal is not hit by section 28. Absolute restriction is not allowed, but partial restriction can be allowed, and placing of a uh, time limit is void. Okay. And also this clause, whenever you are partially restraining or two competent courts and you are choosing one competent court, then that term should be very expressly clear. वो एक टर्म बहुत क्लियरली होना चाहिए. दिस वॉज हेल्ड इन दिस केस सी सत्यनारायण वर्सेस के एल नरसिम्हम. उसमें ये हुआ था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके कॉर्नर में लेटर हेड में लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू मद्रास हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन. ठीक है. सो द कोर्ट सेड, और उसमें दो कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बन रहा था, ए और लेट्स से एम, मद्रास हाई कोर्ट. But the party were saying कि only this court will have the jurisdiction because in the contract on this heading uh, it is written that subject to Madras High Court jurisdiction. So court ने कहा कि नहीं, ये टर्म नहीं माना जाएगा because it is not expressly given on the terms of the contract. वो लेटर हेड में ऊपर कोने में दिया हुआ है. It has to be very much expressed. So this point was also very important. Okay. So the intention to exclude a particular court should be given very clearly. So altogether section 28 is a very important section which says that no term in a contract can absolutely restrain a party from enforcing his right. Neither can any term put a time limit within which such right can be enforced. Also, the parties cannot put any term which extinguishes the right of the other party to enforce their right. Okay, which extinguishes their right completely. Exception is there for clause B. For clause A, exception 1 and 2 is there, that for clause A, exception 1 and 2 is there, that one can oust the jurisdiction of the civil courts by giving that if a dispute arises, we will only go to arbitration. So exception 1 and 2, which is related to arbitration, is an exception to clause A. Okay, it's an exception to clause A, that if any dispute is arising, we will not go to the courts, rather we will go to an arbitrator. Okay, that will be allowed. Also, for clause B, the exception is given in exception 3, which is for the banks. Banks and financial institution can put an extinguishment clause. Okay, but it should not be more than 1 year. Okay, which is not less than 1 year. Okay, but this extinguishment year will start from the date of the breach and it can't be treated as the claiming period. Okay, so this was clear in the recent judgment which we discussed. So thank you all. This topic was important, and recently a lot of cases of banks is related to this topic. Therefore, in this video I have tried to analyze section 28 of Indian Contract Act. So thank you all.